Let us start with the proceedings. Start. स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागतम। भारत के स्वच्छतम, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक इंदौर शहर में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है। I, Mamta Bakliwal, Junior Vice Chairperson, Flow Indore, take this opportunity on behalf of Flow Indore and FICCI Madhya Pradesh to welcome the galaxy of esteemed guests. Ladies and gentlemen, it is our honor and privilege to have the Honorable Minister, Shri Om Prakash Ji Saklecha, gracing the occasion. Thanks a lot, sir. We welcome the stalwarts and all the esteemed dignitaries who, despite their busy schedules, have made it a point to attend our Flow event for boosting women entrepreneurship. A gentle reminder to please keep your mobile phones on silent mode. At the onset, I would like to ask everyone to rise for the national anthem. AV, please. We are proud to say that the video of the national anthem that was played featured our own patriotic Flow women of Indore. We will now have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. I would like to invite Honorable Minister of MSME and Science and Technology, Government of MP, Shri Om Prakash Ji Saklecha, for lighting the lamp. Sir, please. Ms. Ujwala Ji Singhania, National President Flow and Director JK International. Ms. Neha Mittal, Past Chairperson, Flow Indore. Ms. Riya Chabra, Immediate Past Chairperson, Flow Indore. Ms. Meetu Kohli, Chairperson, FICCI Flow Indore and owner Dimensions Furniture and Lifestyle Store. Mr. Saurabh Ji Mishra, Member FICCI and Director Seagull Ventures Private Limited. Light is considered a symbol of auspiciousness, prosperity and abundance in the Indian culture. Light fades away darkness. Light symbolizes knowledge and wisdom. Thanks a lot. I would now like ask Meetu Kohli to escort the guests on the dais. I would like to invite the Honorable Minister, Shri Om Prakash Ji Saklecha,
MSME and Science and Technology Minister, Government of MP on the dais. I would also like to invite a round of applause, please, for the Minister. I would like to invite Ms. Ujjwala Singhania, Ms. Neha Mittal, Ms. Saurabh Mishra on the dais. संस्कृत में कहा जाता है अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं। आई वुड नाउ आस्क चेयरपर्सन फिक्की फ्लो इंदौर मिस मीतू कौली टू प्रेजेंट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ MSME एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा विद अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड एंड appreciation. Ms. Ujjwala Singhania, National President, FICCI Flow, Indore. FICCI Flow, please present the... A round of applause, please. हमारे सम्मान्य अतिथियों का वंदन है। सेवा सादगी इनकी पहचान है। प्रकृति ही जीवन है, इसीलिए पौधों से अभिनंदन है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी firmly believes that our Matri Shakti is our pride. Women empowerment is very crucial to our development. FICCI Flow, with its 8,000 plus members pan-India across 19 chapters, strongly believes in transforming India through industry, trade and innovation. Flow promotes prospective and existing entrepreneurs by providing them knowledge, guidance and networks. No country can truly develop if half its population is left behind. Statistics show that increasing women's labor force participation by 10 percentage points could add a whopping $770 billion to India's GDP. As is the theme of today's conference, Women to the Front, boosting women empowerment through MSME and startup way. Really, when women support each other, incredible things happen. I would now like to invite a dynamic, enterprising and ever-smiling, yes, you have guessed it, our Flow chairperson, Ms. Meetu Kohli, for her welcome address. Her dedication towards promoting women entrepreneurship has made today's event a reality. Thank you, Mamta. Namaste, and on behalf of entire Flow Indore family, I extend a very warm welcome to Honorable Minister Ji, Madhya Pradesh, Shri Om Prakash Saklecha Ji, Mr. P. Narhari Ji, Secretary MSME and Industries Commissioner of Madhya Pradesh, our own dear National President FICCI Flow, Ujjwala Singhania, Honorable Delegate, FICCI members, friends from the media, and my dear Flow family. A very warm welcome to all of you. Today, we are all so well convinced that women entrepreneurs can drive economic growth, but only if they are unable to realize their rights. Moreover, if we work in partnerships with businesses, with governments and civil societies, we can definitely improve the opportunities and outcome of women entrepreneurship in the entire global value chain. This, in fact, is the fundamental reason we all have gathered here today. Honorable Minister, Sir, I would just like to present a brief picture of what Flow is all about. Flow is the women's wing of FICCI, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry,
We have our headquarters in Delhi with 19 chapters. With 38 years of experience, FLOW has been promoting entrepreneurship, professional excellence among women through workshops, seminars, conferences, training and capacity building programs. The main objective of our organization is to encourage and facilitate women to showcase their talents, their skills, their experiences and energies across various sectors. Sir, our FICCI FLOW Indore chapter saw its inception in the year 2015. And in a matter of just 7 years, FLOW Indore chapter has grown enormously. We can proudly state that we are a remarkable strength of 400 plus women professionals today who come from all walks of life. At FLOW Indore, we together take care in contributing to the enrichment and upliftment of each other along with the weaker sections of society. We work as catalysts, creating links between the resource and the user. None of us alone can always do great things. But yes, together, we can all do small things with great love and create some amazingly beautiful memories. I am very, very proud of a close-knit community FLOW Indore today has. We are women who know each other well and always stand for each other. We started this year 21-22 with the motto, Rediscover, Revive and Rise. We have been successful in working on various topics of business promotions, resource pools, a lot of knowledge sharing, learning, environmental hygiene, and self-development. I would like to share a small glimpse of what we did in this entire year. Can I have the video, please?
Thank you so much. Honorable Minister Sir, women's economic empowerment is one of the world's most promising areas of investment, biggest emerging markets, talent pools, and demographic dividends to be tapped. Entrepreneurship and decent work are the bedrocks of any economic empowerment. They support the economic empowerment of women, men, families, communities, and countries. It is recognized that just entrepreneurship alone fuels the creation of decent jobs and helps in building wealth. Honorable Minister Sir, we take the privilege of this platform to point out a few areas where women involvement can definitely be a point of keynote success. One of the key drivers is leveraging procurement to create economic opportunities for women-owned businesses as suppliers to the government and corporates that procure goods and services from companies to carry out their various functions. Whether these entities are delivering health services or building a road or even manufacturing a product, smaller private sector companies are involved as suppliers. This creates market opportunities that have been long recognized as an engine for the growth in MSMEs. Yet, many women-owned enterprises are severely underrepresented as suppliers in this. I would like to suggest if the involvement of more and more women can be done in this procurement exercise. We were also very motivated about the idea of business clusters which the Honorable Minister had given us when we met him in Bhopal. We would also appreciate if provisions are made to push more women entrepreneurs participating in these clusters, which basically will be of garments, furniture, jewelry, food processing, and most of our flow members belong to many of these categories. This would definitely give a great push to women who are already into this business or they aspire to start a new one. Facilitating basic common facilities at these clusters like easy transport, facilitation centers, child care centers, training units can also be a great motivation for women to set up their new entities here. We would also like to say that women-owned enterprises should be trained on how to do business with the government. FICCI Flow will be more than happy to work with the state government to create synergies for augmenting the procurement process and supporting the women entrepreneurs. It is a very general sentiment for most of the women as they face big challenges in starting a new setup when they get demotivated by the small hurdles which mainly include the necessary formalities, the policy understanding, essential paperwork, and many such nitty-gritty details which are required and can become challenging at times. If the state can provide us one window, one communication center, or a small hand-holding in discussing and giving solutions to common queries of women planning to set up a new business or running an existing one, the new business setups will definitely become easier, encouraging, and faster. We all truly appreciate the great efforts of our Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, towards motivating and encouraging women to excel in various areas of business. And undoubtedly, we are very, very grateful to you, Honorable Minister Sir, for giving us this amazing opportunity to interact with you and share our vision. We are very hopeful that this association with MSME sector will prove abounding in the times to come. Honorable Minister Sir, FICCI Flow would like to commit all its support in promoting the participation of women in industry, startups, MSME and development. We will all work hard, hand in hand with the Madhya Pradesh government for making our state destination and brand ambassador of women empowerment. Thank you. Thanks a lot, Meetu. We really hope to scale newer heights under the leadership of the MP government, the Minister, National President, and Meetu. Now, we have amongst us amazing women who exemplify that sky is the limit
and fortune does favor the bold, and you will never know what you are capable of if you don't try. Flow Indore women are unstoppable, and we are proud to say we have some very accomplished women with us. They are women of substance, and being enterprising is their way of life. Our profound gratitude to Honorable Minister for agreeing to felicitate them. I would now like to call upon Ms. Surbhi Shah, our committee member. Her startup Cara Green is working towards a greener, cleaner and healthier planet Earth. One of the 60 startups out of 68,000 being funded at Shark Tank India Season 1 by Mr. Anupam Mittal and Mr. Piyush Bansal. A round of applause, please. One of the top 25 startups awarded by Indore Super Startups. One of the top 3 startups selected by Government of Madhya Pradesh for their efforts for replacing single-use plastic. Flow Indore is proud of you. We now have Ms. Farah Saeed, founder FS Closet, a fashion house. She was a part of one of India's leading magazine brands, Femina's Leading Women in Business issue of August 2021. She was a part of this issue because of her versatility in her work and hard work. We are proud of her. A round of applause, please. Congratulations, Farah. Ms. Shruti Purohit, founder, 9 Square Architects. She has many accolades to her name, and her placemaking project, the famous Chappan for which Indore is known, has been ranked first in the built environment category for ISAC awards at all India level. Okay, a photograph, please. Thank you so much. I would now like to invite Mr. Saurabh Mishra ji, Member FICCI and Director Seagull Ventures Private Limited, who has really been a big support in making this event a reality, to give his insights. Thank you, ma'am. Good afternoon. Shri Om Prakash Shakleja ji, Honorable Minister for MSME and Science and Technology, Government of Madhya Pradesh. He is our patron for all the MSME development which have been happening recently in state. Shri P. Narari ji, Secretary, MSME and Industrial Commissioner, Government of Madhya Pradesh. Ms. Ujna Singhania ma'am, National President FICCI Flow and Director JK International. Sir, the role of micro, small and medium enterprise in the economic and social development of the country is well established. They are the growth engine of Atmanirbhar Bharat mission. The MSME is predominantly the nursery of entrepreneurship, often driven by the individual's creativity and motivation. The sector contributes to 8% of GDP and almost 60 million jobs. Sir, I am pleased to inform you that FICCI has always been proactive in terms of taking up the issues of MSME with the respective authorities and work closely with the Ministry of MSME, Government of India and state government and other stakeholders. Sir, FICCI has a MSME committee constituting experts from all over the country which deliberates on areas that hinders the growth of MSME and come out with the probable suggestions, recommendations to the government. Honorable Minister, I would like to share with you that to assist MSME, FICCI organizes capacity building programs across the country to disseminate information and to educate
MSMEs about various contemporary trends and export potentials and other sectoral information. FICCI focuses a lot on export-oriented capacity building programs, and which is the key, which is required at the current moment. Sir, in December 2013, FICCI established the FICCI Confederation of MSMEs, which is an allied body under the umbrella of FICCI. FICCI CMSE, a pan-India body, endeavors to play an active role as an aggregator for developing capabilities of especially micro, small enterprise in various aspects. Sir, I am pleased to inform you that social media giant Meta, earlier Facebook, has undertaken under the initiative of She Means Business program, has partnered with FICCI to support 5 lakh women-led small businesses. Under the initiative, Meta will support in enabling market linkages, and which is the problem of most of the SMEs in India, because we post-production are finding it difficult to connect with the right market, and Facebook, now Meta, is supporting through FICCI for all the SMEs. Honorable Minister, to enable financial linkages and to develop banking capabilities, FICCI has partnered with TransUnion Civil to launch a unique nationwide MSME consumer education program. Again, sir, this is a big problem, because despite all the benefits given by the state governments in terms of capital subsidies and many other relaxations and preferences, MSMEs in India are finding it difficult to raise loans from banks. And for that, FICCI has taken this initiative so that with TransUnion Civil, we can run a capability program so that MSMEs can understand the banking linkages and financial linkages in a much better way. Honorable Minister Sahab, FICCI has been working very closely with Government of India on Startup Mission, and you will be pleased to know that in the ongoing World Expo 2020 in Dubai, FICCI is facilitating India's participation. We have been continuously organizing pitch sessions, demonstration sessions for startups from all over the India. We have been, and it is my, again, sir, few of our MP startups also participated recently. One of our FICCI Flow member has presented her case at Dubai. Apart from that, FICCI has extended recently support to few more startups from Indore who are working on Start in Indore initiative, and this is a very unique initiative where startups from Madhya Pradesh, especially Indore, they are inviting investment from all across the globe. So they are running a self-funded program, and we would like to request you to extend this program to other cities. Sir, Madhya Pradesh has constantly surging new heights in the development chart, and with the launch of Atmanirbhar Madhya Pradesh initiative, our Honorable Dynamic Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji has not left any stone unturned to contribute to Atmanirbhar Bharat Abhiyan and making India a $5 trillion economy. Sir, to facilitate the vision of $5 trillion economy, I would like to request you to consider giving preferences to MSMEs, startups, and especially women entrepreneurs in the state by streamlining the provisions of public procurement policy, MSCD Order 2018, where certain reservation is given to MSEs from the state. But we look forward for a strict adherence to the policy so that vocal for local mission can be get benefited, and our startups from local domain can get benefited. I would also like to take the opportunity to put forward a suggestion to establish Innovation and Business Acceleration Center. We are running a very successful initiative at West Bengal, where FICCI is supporting West Bengal government to run an incubation center which not only focus on startup but also stand-up India company. So FICCI as a leading industry partner, or members of FICCI as a leading industry partner, can actually facilitate in mentoring stand-up India participant and startup participant. So that way, because mentoring is something which is again needed in the particular domain.
So this is something which can also be repeated in the state of Madhya Pradesh in a much better way, because we have now lots of potential in terms of agro processing and other export-oriented domain. Honorable Sir, I again want to request you, we have multiple startup policy, and state has again come up with a new comprehensive startup policy. Sir, but I look forward as a suggestion for a convergence with national policy for faculty and student startup. Since 2019, Government of India has initiated a policy where any student, ex-alumni or student, current student, can raise a enterprise in association with his her college, and that in the particular association and this particular enterprise they can get the benefit of the infrastructure they have at academic institutions. Sir, I request you for a convergence, because this policy covers two departments. So there is a there has to be a convergence in between higher education department and your MSME startup department, so that the facilities can be extended to those enterprises. And I believe that if that convergence is done, then we can have thousands of enterprises at each and every quarter of or sector of Madhya Pradesh at every location. Honorable Sir, there are lots of areas where your support is solicited, but I believe that all the audience here are waiting for your, they want to interact with you, they want to discuss a lot, they have prepared lots of questions. So I just want to give a closer to the, thank you, sir. Thanks a lot, Saurabh ji. Flow Indore is proud of its presidium, who have set very high standards and have been instrumental in the growth of Flow Indore. I would now like to call upon our young and dynamic past chairperson, Flow Indore, Ms. Neha Mittal, to express her views. She is also the national president Ekal Yuva and an entrepreneur in FMCG industry, to really express her views. Honorable Minister of MSME, Science and Technology, Shri Om Prakash Saklecha ji, Secretary MSME IAS P. Narhari ji, National Flow President Mrs. Ujjwala Singhania, FICCI Member Mr. Saurabh Mishra, Flow Indore Chairperson Meetu Kohli, Mamta, and dear Flow members, a very good afternoon to one and all. In New India, young female entrepreneurs are navigating uncharted territories and turning innovative ideas into successful businesses. They are providing solutions to the very real problems and changing millions of lives. Not only are they smashing the patriarchy, they are also setting up an example for countless young girls. However, most of this would not be possible without the app's social and financial support. Kudos to the government for stepping up and providing many such schemes that have helped and encouraged women entrepreneurs, such as the Stree Shakti Yojana, Bharatiya Mahila Bank Business Loan, Udyogini Scheme, etc. The government did not just stop here, but also created the Women Entrepreneurship Platform that provides an ecosystem for budding women entrepreneurs as well as existing entrepreneurs across the country by providing different support services like incubation, training, marketing, mentorship, etc. As time changes, the rise of female entrepreneurs in India has shown that women in business are capable of matching their successful male counterparts. Despite the increase, female entrepreneurs continue to face several unique challenges. These challenges often range from lower personal financial assets to gender discrimination and social taboos. Although the word entrepreneur is a gender-neutral term, it has long been reserved for men. But long gone is that era where women were only restricted to play the role of a homemaker or a child rearer. Today, women have broken the glass ceiling
and are doing an excellent job for themselves by reaching greater heights. We also have some examples here at Flow itself, like Surbhi, and I'm sure all of us sitting here have done great jobs in their fields. Here is a story of a woman who not only overcame the gender bias, but also broke free from all stereotypes. This story inspires me, so I thought of sharing it with you. Although a graduate in the late 1970s with a BSc in biology and zoology, she aspired to follow in her father's footsteps later in life. Her father's work as the head brewmaster for one of India's largest beer companies inspired her to change her career. Shortly after, she headed to Australia and to train as a brewmaster. So the lady sitting right in front of me is also very passionate about that, and sharing this story always reminds me about her. Her intentions were to return to India and obtain a job with her newfound knowledge. However, the Indian brewing industry was heavily male-dominated, which is true even today, and employers refused to offer her job. Now she recalls, "I was being politely told, 'We are very impressed with your qualifications, but this is not a woman's job.' Undeterred, and with little support, she decided to start her own venture and began building her own business from scratch. Fortunately, she met an Irish entrepreneur who was looking for an Indian partner to produce enzymes, a role that suited her interest in biology. Biocon India was launched in a garage in Bangalore in 1978 with a seed capital of just rupees 10,000. Yes, ladies, this is the story of one of the most successful entrepreneurs of India, Kiran Mazumdar-Shaw. And today, Biocon is one of India's largest biotech companies with a market cap of nearly $7 billion on the Bombay Stock Exchange. So the time has come for women to enter mainstream industry and take the economy of the country to a next level. So let me conclude by this wonderful quote by Mary Kay. "Aerodynamically, the bumblebee shouldn't be able to fly. But the bumblebee doesn't know that, so it just goes on flying anyway." Thank you. Thanks, Neha. What an inspiring story. Now, the dynamic Miss Ujjwala Singhania is the 38th National President of FICCI Ladies Organization and is the Director of JK International. Under her leadership, Flow is committed to sustainable industrial development as a means of achieving economic prosperity both for women and the country. Under the leadership of the perfectionist, Ms. Ujjwala Ji Singhania, Flow has done amazing work for the empowerment of women entrepreneurs in all walks of life. Let us hear the same from the enigmatic lady herself. Over to you, ma'am. Namaste. Very happy to be here. Thank you for such a warm welcome. I'm really very honored and humbled. Thank you. I would like to welcome our Honorable Minister, Shri Om Prakash Sakleja Ji, Minister for MSME and Science Technology, Madhya Pradesh, for being with us today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Nahar Ji, Secretary MSME and Industry Commissioner, for your support in industrial growth. I would also like to make a special mention of our Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, who has always kept women empowerment on top in all his policies. Flow is one of the oldest business chambers with 18 chapters pan-India. My vision is to empower women in industry, trade, startup, and technology, and to promote women entrepreneurs by providing them knowledge, guidance, and networking. I would like to take this opportunity to congratulate and thank my Indore chapter
Mitu Kohli and her team for all the good work towards empowering women, which has made Flow community larger and stronger. I would also like to acknowledge the presence of Flow and FICCI members present today. Thank you, friends from media, for all your support and being with us today. I must give a big round of applause to all the wonderful ladies here who are the strength and champion of women empowerment. Honorable Minister, the increasing presence of women as entrepreneurs has led to the economic growth of the country. Women-owned businesses enterprises are playing a prominent role in society, inspiring others and generating more employment opportunities. Women MSME have managed to enhance their share in overall MSME base from 13.72% to 20.37% in the past 10 years. Honorable Minister, I would like to make a few suggestions from Flow to the state government. Firstly, we need to create a plug-and-play infrastructure for the women entrepreneurs to commercially test their products without much investment. Sir, I would also like to throw some light on the lack of awareness around the existing credit support available by the government in MSME and women-owned very small enterprises segment. Sir, on the awareness part, the government should organize micro-campaigns across cities and towns about various schemes for MSMEs. We'll be more than happy to work alongside with you in this effort. The women entrepreneurs present here today, I would like to request you to build your network of mentors and entrepreneurs along with your digital presence to stay informed of the government support available. Sir, the percentage of women directors have grown to 20% from 3.5% earlier due to the Companies Act. At Flow, we have trained over 100 women in the past few years. Honorable Minister, I would like to suggest you to encourage more companies to take up women directors on their board. The more women at the leadership role, the bigger participation we'll see in different aspects of an organization. On this note, I would just end my speech, and I would like to thank each one of you present here. Thank you very much. Thank you, Ujjwala ji. As Napoleon Bonaparte says, until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. Now, the adoption of policies and implementation of schemes that provide appropriate training, incentivization, economic and cultural recognition is key to the success of women entrepreneurs. I now invite Shri R.R. Gorkheda, Assistant Director, MSME Department, to present the various policies that exist. Sir, please. With the permission of Honorable Minister, I will start my presentation. Yes, I could make So out. earlier we have 2019 policy, but due to new classification of MSME, we have now MSME Development Policy 2021. So
this policy is start from 13 August 2021 of notification date, and all the earlier existing unit I knew the voice is not clear, that is why I spoke a little louder. which can start production after 12th of August can eligible for assistance under this policy, and up to जो अपने स्टार्ट हुई है फॉर्म 1 जुलाई 2020 से 13 अगस्त तक यूनिट्स जो कि अबाउट 10 करोड़ है और 15 करोड़ तक है, वो अर्लियर पॉलिसी में एलिजिबल हैं. So we have now definition of plant and machinery. Plant and machinery is accordance with the MSME Act 2006. Building, as you know, shall not include अपने dwelling units, and investment period is maximum last 3 years from the commencement of production. And existing unit की definition, you know that any unit जो 13 अगस्त के पहले स्टार्ट हुई है वो existing unit की definition में आएगी हमारे यहाँ. Next we have expansion, diversification and technical upgradation. So any unit जो माइक्रो है वो 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल यूनिट है अपना मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और जो मीडियम यूनिट है मिनिमम 30% अप टू 10 करोड़ तक का जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो एलिजिबल फॉर द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2021. सो वी हैव जनरल प्रोविजन, एक 2021 की स्कीम है इंसेंटिव स्कीम. नेक्स्ट GST रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर दिस to avail assistance in this policy. 70% total employment to the local residents of the MP, and self-employment schemes beneficiary are not allowed in this assistance scheme. So we have financial assistance. We have major assistance called industrial development subsidy, which is 40% of eligible investment in plant and machinery and building in 4 equal installments. And for women entrepreneur and SC/ST entrepreneur, it goes up to 48%, and SC/ST women entrepreneur it's 50%. So we have 50 up to 50%. But for export unit, we also have 2% extra subsidy per year for export unit, which 25 to 50% export of total sale, or 3% for export more than 50% additional subsidy. Next, so we have a chart which show that SC/ST women entrepreneur which have more than 50% export can avail 62% of industry development subsidy. These subsidies are up to for the unit investing up to 10 crore in plant and machinery. Now we have a unit which have more than 10 crore but up to 50 crore investment in plant and machinery, which have maximum 40%. But we have multiple of export multiple, geographical multiple, employment multiple, gross supply multiple. So you can see the chart that 100 crore investment in plant, machinery and building, a unit get 28.11 crore subsidy from government of MP MSME department. Now we have quality certification and patent subsidy. Government of India has a scheme zero effect, zero defect. Government of MP also gives some assistance in this category, 10, 20 and 25% respectively to micro, small and medium units. And we have export certification subsidy 50% to 25 lakhs for European Union and other OECD country export certification, and 50% maximum 50 lakhs for WHO GMP and US FDA certification. We have also 100% or 5 lakh for patent registration, and also ISO BIS B certification subsidy maximum 25 lakhs, maximum 5 lakhs for unit having investment maximum 25 lakhs.
financial assistance for infrastructure development up to industrial premises. We have water, power and road infrastructure development subsidy, 50% maximum 25 lakhs for the unit investment up to 10 crore. And more than 10 crore, we have 1 crore each for water, power and road. Now, for waste management system, we have subsidy for 50% and 25 lakh for ETP. CETP common effluent treatment plant, we have 50% maximum 1 crore. And for unit have more than 10 crore investment in plant and machinery, we have 50% maximum 1 crore subsidy for ETP. We also have subsidy for private cluster, which have 50% maximum 2.5 crore for less than 10 acre area. More than 10 acre area, we have 50% maximum 5 crore. And for a flatted industrial complex, we also have a subsidy, same subsidy, but minimum area is 10,000 square feet. For power loom, pharma cluster and apparel cluster, we have subsidy up to 60% maximum 5 crore to develop private industrial area. Now, financial assistance for audit, energy audit, we have 50% and 50,000 for energy audit, and for implementation we have 25%, 5 lakhs for energy audit. Now we have also have subsidy for pharmaceutical lab, 50%, 25 lakhs. We have also have some special packages for apparel sector. We have 2,500 per month per employee for the apparel sector unit, up to which have investment up to 10 crore, and more than 10 crore we have 5,000 per month for 5 years. We also have interest subsidy to provide interest subsidy at the rate of 5% for term loan for plant and machinery approved under 8 of scheme of Government of India. Electricity duty free for 7 years and power tariff at the rate of ₹5 per unit for 5 years. Now we have food processing unit. We have also a special package at the rate of ₹1 per unit or 25%, whichever is less, is a electricity duty mandi fee exemption for 5 years or 50% of total investment. और फूड प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो उसके लिए 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू मैक्सिमम 5 करोड़ भी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सब्सिडी हमारे यहाँ. नेक्स्ट हमारे यहाँ स्पेशल पैकेज टू टेक्सटाइल यूनिट्स विच टेकन टर्म लोन फॉर 8 of schemes of Government of India, up to 25 crore investment, 2% for 5 years, for up to 25%, more than 25%, 5% for 5 years. But a new composite unit or any unit, standalone composite unit के लिए 7% interest rate up to 5 year तक की सब्सिडी भी हमारे इसमें है. Now support for power loom, we have upgradation from shuttle loom to shuttle-less loom at the rate 5%, 25%, and electricity concession at the rate 1.5 rupees per unit for 20 HP power loom, and more than 20 HP power loom we have at the rate 1.25 rupees per unit subsidy. For all this concession, we have state level committee for more than 10 crore investment in plant and machinery. So the state level committee comprised of under the chairmanship of chief secretary, and commercial tax IPIP department are the other member. MPSIDC is a member secretary for that. District level committee deal with investment up to 10 crore in the unit, and it's fully authorized for all the concession up to unit for up to 10 crore, or you can say small micro and small unit. There is appeal provision. First appeal for district level committee goes to Industries Commissioner, and second appeal goes to Secretary MSME. And for state level committee, the next appeal goes to CCIP, Cabinet Committee of Investment Promotion. Thank you. If you have any question, please ask after
after lunch break. So we have very short time program. Okay, thank you. Thank you for the so many knowledge about the policies. Now, he is Secretary MSME and Commissioner Industries, Government of MP. He joined the Indian Administrative Services in 2001. He is a very versatile personality with many feathers in his cap. Indore is indebted to you for your Ho Halla song. Yes, it is Mr. P. Narhari. He would be joining us virtually and enlightening and motivating us. Over to the team. Welcome, Thank you sir. so much. Thank you so much for inviting me to this wonderful session. Honorable dignitaries present in this session, Shri Om Prakash Saklecha ji, my minister in the MSME department, Ms. Ujjwala Singhania ji, National President, FICCI Flow, and the Director of JK International, Ms. Neha Mittal, past Chairman, FICCI Flow Indore, and National President of Ekal Yuva, Shri Saurabh Mishra ji, Member FICCI and Director, Seagull Ventures Private Limited, Ms. Meetu Kohli ji, Chairperson, FICCI Flow Indore, and owner of Dimensions Furniture and Lifestyle Store. And to all the FICCI Flow members, a very good afternoon to all of you. To begin with, I would like to thank FICCI Flow for inviting me and providing me with an opportunity to be amidst of you all on this one of its kind conference on Women to the Front, boosting women empowerment through MSME and Startup Way. Dr. APJ Abdul Kalam has once said, quote, empowering women is a prerequisite for creating a good nation. When women are empowered, a society with stability is assured, unquote. Women are the drivers of socio-economic growth and essentially forerunners to achieving the sustainable development goals like poverty, eradication, inequality, good health, decent work, and economic growth. In India, almost half of the population comprises of women. However, the socio-economic potential of women goes largely unrecognized. The majority of women are still economically marginalized. Much of their work is invisible, and they are largely employed in low-skilled, low-paid, informal work with little or no social security as domestic workers or self-employed home-based workers or unpaid caregivers. The number of micro, small, and medium enterprises led by women entrepreneurs in the country has jumped from a mere 2.15 lakh as per MSME Ministry's financial year 2011 annual report to 1.23 crores in financial year 21. Women MSMEs have managed to enhance their share in the overall MSME base from 13.72% to 20.37% in the past 10 years. On startup front, India is the world's third largest startup ecosystem. However, only 7 out of 100 entrepreneurs in India are women. Nearly half of them get into the business out of necessity rather than passion or aspiration. Further, just 20% of Indian MSMEs are owned fully or partially by women. But things are changing. Gradually, more and more women are expanding their entrepreneurial horizons and venturing into an unprecedented range of business areas. Women are fiercely entering into the world of business and economic independence. The startups in the state of Madhya Pradesh have outgrown in numbers from mere 7 DPIIT recognized startups in the year 2016 to 1,800
DPIIT, Government of India recognized startups, out of which 770 are women-led startups. And to support these startups, the incubators ecosystem has also flourished in the last couple of years. There are around 30 incubators in the state. Entrepreneurship development is a catalyst for economic development and can also be leveraged for the economic empowerment of women by conferring them control over the decision-making process and educating, upskilling and reskilling them. By providing adequate technical and financial assistance, women's participation in the entrepreneurial stream can be encouraged. Key challenges for new entrepreneurs in India include lack of funding, limited understanding of business know-how, market penetration, skilled resources, complex regulatory environment, etc. However, for women, the barriers are often gender-pronounced, greater and harder to overcome. These barriers are social, personal, and institutional. Taking cognizance of these roadblocks, the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, under the leadership of Shri Om Prakash Saklecha ji, our Minister, and the overall leadership provided by the Chief Minister of Madhya Pradesh, we have launched several schemes and initiatives to encourage and support women entrepreneurs across the state. The key schemes and incentives around women's economic empowerment have been elaborated by my Assistant Director, Shri Gorkade ji, just now. But we are providing special assistance to women with, in the sense that we are providing additional assistance and concessions and incentives to women apart from what we give to others. Procurement from women-owned enterprises. The Ministry of Micro and Small and Medium Enterprises has mandated that central ministries, departments and public sector undertakings must target 25% procurement from MSME sector, of which 3% must be women-owned. There are many opportunities for women entrepreneurs in government programs like One District, One Product program, Ministry of MSME's Micro and Small Enterprises, cluster development programs, KVIC's scheme of fund for regeneration of traditional industries, which is known as Spurti, etc. The Ministry of MSME, recognizing the needs of the micro entrepreneurs, launched the Prime Minister's Employment Generation Program. This is a credit-linked program wherein margin money is provided to the micro entrepreneurs to set up their micro enterprise. It is heartening to note that the scheme has gained popularity among prospective women entrepreneurs, and the share of women covered by the scheme has been constantly growing over the last few years. This scheme serves the needs of rural and urban women alike by providing increased amount of margin money and hand-holding assistance. Most of the speakers have talked about startups, and we are very happy that, and I think Honorable Minister will elaborate on this issue. We have recently come up with the new startup policy of Madhya Pradesh, and we are happy to inform that additional 20% assistance to startups set by women will be given under the new startup policy 2022. As a nodal department, we have started a few activities to develop the startup ecosystem in the state, like Startup R, Facilitation R. And initially, when one of our speakers was mentioning initiatives like Start in Indore and similar initiatives across the state are being taken up to facilitate and ensure that startups further grow and many unicorns are born out of Madhya Pradesh. And I'm very hopeful that some of these unicorns will be from women entrepreneurs. Since women entrepreneurs face different kinds of economic and societal barriers in their entrepreneurial journey, they also require a different kind of support system. Private sector partnership. While government policies and schemes, successful women entrepreneurs
Corporates through their CSR initiatives, NGOs and financial institutions are supporting this cause. There is a need to create a strong support framework and women-specific incubation program for women entrepreneurs by leveraging private sector partnership. And I'm very sure that FICCI Flow will take up this initiative from their side. Capacity building, education and skills training are key to unlocking opportunities for all entrepreneurs, but especially important for women who are at greater risk of being left behind. Network of existing and successful entrepreneurs, a support network where bodies such as FICCI Flow works towards creating a nurturing ecosystem that motivates and supports women entrepreneurs while providing them the much needed training in literacy for an entrepreneur, understanding competence and competitiveness, mentoring and other necessary resources to make a quantum leap are much needed. By providing mentorship and mutual support group of successful women entrepreneurs who can serve as a role model, women may be inspired and motivated to become entrepreneurs. Today I was reading an article. I'm sure that you must have come across. There are 13 districts in Kerala, and out of these 13 districts, 10 district collectors are women IAS officers. We should be very proud that in every sector, women are taking charge, women are taking leadership roles, and I'm very sure women to the front in boosting women empowerment through MSME and Startup Way will definitely be what we'll be seeing ahead. Once again, congratulating FICCI Flow for organizing this program and inviting me to speak on this occasion. Best wishes. Thank you. Thank you so much, sir, for the motivating and inspiring words. We would really have loved to listen to you in person. We are keeping our fingers crossed for the same next time. Friends, I would really like to share with you that I, along with the Flow team, had the privilege to meet the Honorable Minister in Bhopal, and I must say that we were really impressed by his vision and dedication towards the goal of making Madhya Pradesh a destination for women entrepreneurs and fostering the growth of women in every field. Sir, you are a visionary and you provided us with so many takeaways in the brief interaction that we had with you. It is your encouragement which boosted our confidence in believing that the government is here to support women entrepreneurship in a very big way. We are very excited to hear today's chief guest, our Honorable Minister MSME and Science and Technology Minister of Government of Madhya Pradesh, Shri Om Prakash Ji Saklecha. से 2 मिनट अपनत्व की झलक कदम कदम पर पाएंगे, ना मान ना अभिमान, सहजता, सरलता और सादगी के साक्षात्कार। आप आमंत्रित हैं सर। Thank you very much. It's a great pleasure to be with you. And perhaps it is the first women entrepreneurs interaction in last 1.5 years. I must appreciate it. मंच पर विराजित उर्मिला सिंघानिया जी, नेहा मित्तल जी, शांतनु त्रिपाठी जी, मीतू कोहली जी और हमारे मीडिया के सभी मित्र लोग, सदन में बैठी हुई सभी मातृशक्ति, हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स, हम सब यहाँ पर एक नई सोच लेके एकत्रित हुए। सोच
कि हम अपनी एनर्जी को और कैसे बेटर यूटिलाइज करें. We have enough energy, but our energy is not being properly utilized for our family members as well as for our nation. When we talk कि हमारे में बहुत कुछ कैपेसिटी है, we have enough resources, we have enough capacity to take the risk, but we are slightly lacking into a directional mode. That how to start, what to start, when to start, and how to face the problems which at times our family member doesn't support. Might be knowingly or might be being overburdened or slightly egoist, all these different kind of problems. But when we talk, okay, if we are determined and we are sure, then the state is really welcoming. And I have a very proudly I can say that Madhya Pradesh is the state where first time we have all the political up to Sarpanch, Nagarpalika Adhyaksh, all the political posts 50% reservation for women. Because we want them to come ahead and be more, because they understand more problem of the society. The small problems gives more pain than the big problem, because big problem always solved with the mutual understanding, but small problems carries more stress and never settle on a crossboard to solve them. So it is women, we want them to grow in every sector. Madhya Pradesh is the first state which started Lalli Lakshmi Yojana. Although it's a small talk, but it makes a lot of difference in rural belt, that it support and it create a confidence for a girl of a rural belt that okay, when she will start anything in her life, she has certain capital of her own for which she doesn't have to look on her parents' support. And it helps a lot. We have more than, I think, 20 lakh Lalli Lakshmi, 40 lakhs I think, let me correct, 40 lakh Lalli Lakshmi girl child in Madhya Pradesh. And that's a very big number. But now let's come what for we are sitting on this day, that we must have very difficulty to take out the whole day, coming from different cities, sitting here and understand that what we will get out of the day's whole work. Because I always think that if we invest even a 1 hour on anything, what return are we getting? So on the policy front, you must have understood that we are giving an additional support to the new entrepreneur and especially women entrepreneur, 10% additional subsidies, priority in allotting the land and all those things. But when I joined this MSME ministry, I decided that we should try and create small hubs in every district where 5, 10, 20 entrepreneurs comes, they start their own industrial zone. A small piece of land, I don't want them to invest more on the land. I want them to invest on the technology. I want them to invest on the equipment so they can
get success in a faster way. The stress which you were having, that they don't give any priority, but we are coming out with a policy where state entrepreneurs, they will have a reservation on government procurement. अभी हम 25% minimum reservation कर रहे हैं for the entrepreneur of MSME in any government buying on the lot of products, so that you get an opportunity to start up. We are also coming out with a different kind of clusters. Like I had been told that you are doing with the furniture business. We are coming out with the biggest furniture cluster of the country in Indore itself. To start with, we have given 500-acre land in the national highway Indore to Ahmedabad. Recently we have started and handed over the land, I think, about a month before. Now we are trying to work out a concept of making different kind of cluster like furniture, toys, food, agro-processing. We are also coming out with the pharmaceutical cluster. We are also coming out with the ready-made garment cluster, where we are going to not only support on the capital investment only, but also if you employ the worker, we support in ready-made garment. Any number of employee you employ, we are giving 13,500 rupees for the training of that manpower for the first time. And then for the next 5 years, we are supporting financially for his salary also. In ready-made garment, if you invest more than 10 crore, one single cluster with 10, 20 women and start together or alone independently, we are supporting 5,000 to 6,000 for every employee for next 5 years. It means what you are investing, we are supporting more than that with that, so that initial your risk is being shared. And we are coming out the similar kind of policies on other angle also. If we do something on the technology element, also we are supporting. I had asked first time in Madhya Pradesh, all the MSME, we had a joint venture with 36 CSIR labs of the Government of India. Each lab is specializing on some specific product, development and the technology and how to be up to date, because MSME is having a maximum problem in updating the technology, because we can't afford to buy the technology every time, and technology is changing very fast. So what we did, that all the labs will support in any Madhya Pradesh MSME entrepreneur on the technology. These 36 labs, they are super specializing in each field. Like we have a few challenges. Agriculture waste, the biggest challenge. Pollution बहुत ज़्यादा उससे हो रहा है. पूरा दिल्ली 3 महीने लिटरली हरियाणा में एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाते हैं और 3 महीने तक कोहरा और धुंध के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है. अभी उसके बहुत प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, गैसेस, बायो फ्यूल एंड ऑल दोस थिंग. अब उसका अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए तो हमारी भोपाल की लैब उसकी प्लाई बनाना, उसका बोर्ड बनाना, उस वेस्ट से कैसे क्या करना, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है. वी कैन सपोर्ट द टेक्नोलॉजी कास्ट ऑल्सो. हम अगर बात करें, आज ही मैं कल बैठा हुआ था, एक प्रोजेक्ट मैंने वर्कआउट किया कि जितने भी पेरिशेबल गुड्स, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
all those things. कोरोना ने क्वालिटी और पैकेजिंग पे और उसकी कैसे उसकी पैकिंग आ रही है, कितना वो सही है, उस पर बहुत कॉन्शियसनेस बढ़ा दी. अगर मैं बात करूं एक किसान को, उसके यहाँ से टमाटर 5 रुपए किलो जो उठता है, वो आपके घर तक पहुंचने में 60 रुपए किलो तक हो जाता है. उसका अगर कोई वेंचर बनाए, कल परसों गडकरी जी आए हुए थे, तो आजकल स्टोरेज की टेक्नोलॉजी बदल गई. उसको प्रॉपर क्लीन करके फार्मर्स की सोसाइटी बनाकर उसके लिए हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए, CFC. तो ऑन दैट CFC वी आर सब्सिडाइजिंग अप टू 90%. 90% सब्सिडी हम दे रहे हैं. इट मीन्स कॉमन फैसिलिटी सेक्टर पे, इट मीन्स यू आर नॉट इन्वेस्टिंग वेरी लिटिल मनी. और उसका हमने एक मॉडल बनाया कि अगर आप 50 किलोमीटर पे एक कॉमन 500,000 किसानों का जॉइंट वेंचर बनाए, उनसे स्पेसिफिक वेजिटेबल फ्रूट्स डेवलप करवाएं, उसकी पूरी हाइजीनिक वे से फिनिशिंग करें, पैकिंग करें, लेबलिंग करें और एक चैनल से डोर डिलीवरी करें. The margin is 4 to 5 times. Any distributor system cannot cost more than 40% of the cost. Any distribution system. You have enough margin to do. You understand what is required, when is required. Dehydration of the vegetable. It's a traditional Indian. Women used to do lot of dehydration, and especially if you understand the Jain community, they take 4 months green vegetable कभी भी fresh नहीं खाते, dehydrated खाते. उसके पीछे scientific reason है. Now, if women entrepreneur thinks on those things, they can do the wonderful things. मैंने अभी 5-6 जोन बनाए इस काम के लिए मध्य प्रदेश में. And each zone we are investing more than 100 crore और 5,000 लोगों का कनेक्शन होगा उसमें. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस वुमेन्स कैन डू वंडर. क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है. अगर मैं बात करूं, कश्मीर से एप्पल जब स्टार्ट होता है 20 रुपए किलो स्टार्ट होता है. आपको क्या भाव मिलता है? क्या स्टोरेज कास्ट होगी? क्या उसकी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगी? इमेजिन योरसेल्फ. एंड यू हैव ए वेरी गुड कनेक्शन ऑफ मेकिंग द चेन ऑफ ग्रुप्स. और एक और चीज अच्छी हो गई कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, ई मार्केटिंग. So it is not only perishable goods, it's a design of the textile. E-marketing. आप कितना काम कर सकते हैं? आने वाले समय में जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, IT related jobs, working, creating entrepreneurship of in new technology. अब अभी जितनी ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ रही है, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे उसके सपोर्ट से कितने नए काम कर सकते हैं, कितने नए रिसर्च एंड एनालिसिस आप पहुंचा सकते हैं. डाटा एनालिस्ट आज की तारीख में सबसे बड़ा डाटा एनालाइजिंग का काम हो रहा है. नो सिटिंग इन an office, working from home with a group of team, or working in an office with a analytic thoughts. We can give lot many things. और इन सब चीज़ों के लिए हम जितना चाहें हम सपोर्ट दे रहे हैं. चाहे वेंचर कैपिटल फंड की ज़रूरत हो, चाहे आपकी मार्केटिंग में. अभी हमने एक टाई अप किया मध्य प्रदेश के MSME ने कि फ्लिपकार्ट 5,000 लोगों को ट्रेनिंग देगा ई मार्केटिंग के लिए. वो अपने प्रोडक्ट को
although the class we are sitting, but I'm talking about the total women initial startup, lower middle class women if want to start, they need the support कि हम e-market कैसे करें. तो उनकी फ्री ट्रेनिंग करवाएंगे, 6 महीने उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे, they will not charge any commission. Because initial profit support, पहला प्रॉफिट कमाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद आदत हो जाती है. फर्स्ट इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकम, लेट इट बी फॉर एनी पर्सन हु स्टार्ट्स हिज कैरियर. तो वो जो फर्स्ट इनकम के समय जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. आपने एक बात और कही कि यू वांटेड टू डू इट इन ए लार्जर स्केल with every district. Whatever support you need, we can provide. Because we are looking कि अब फोकस एक या दो शहर में ही व्यापार लाके रूरल से अर्बन जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग आज की तारीख में नेचुरल वे में 50% कम हो गई, क्योंकि फ्रेश एयर सिटी में नहीं मिल रही है. लाइफ बहुत स्ट्रेस में आ रही है सिटीज़ की, और जो अंतर पहले था ज़्यादा कि हमारे पास रूरल बेल्ट में पावर नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, मेडिकल सपोर्ट नहीं था, इस कारण रूरल से अर्बन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर था. लेकिन अभी बहुत तेज़ी से वापस अर्बन से कई लोग रूरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. मैं अगर अपनी परिवार की बात करूं, मेरा बेटा जो दिल्ली रहता था, इस कोरोना के काल में वो शिफ्ट होके मेरे गांव चला गया. 1 साल वो गांव में रहा, मेरे फार्म हाउस पे, जहां मुश्किल से वहां की पॉपुलेशन 5000 थी. उसने कहा कम से कम फ्रेश एयर तो है, मैं काम तो अपने नेट पे कर रहा हूँ, उस पर कर रहा हूँ, सप्ताह में 1 दिन भी मैं दिल्ली चला जाऊँ, 2 दिन भी चले जाऊँ, काम चलेगा. नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग, बट माई पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इस के आप अगर रूरल में ये अपॉर्चुनिटी और ये एक्सरसाइज करें और छोटे छोटे वेंचर के बारे में सोचें और उसका एक वापस बड़ा अम्ब्रेला बनाए शुरू में, FICCI can play a big role in this, that they can do certain initial support on the marketing connectivity. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करवा देंगे किसी भी प्रोडक्ट की. अभी अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा विषय अभी बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया, फूड हैबिट में बहुत बड़े परिवर्तन आ गए. आप बहुत कॉन्शियस हो गए वेट के बारे में, किससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. हमने कभी सोचा हम गेहूं खा के क्या पा रहे हैं? क्यों नहीं हम किनोवा खाना शुरू करें? इट डजंट वेरी. अगर मैं कॉस्ट एंगल से देखूं, मात्र 10% वेरिएशन है, बट मार्केटिंग कंपनी ने उसे 100% वेरिएशन कर दिया. 300 रुपए 400 रुपए किलो किनोवा. व्हाई कांट यू स्टार्ट विद योर ओन लेबल? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किनोवा और गेहूं, wheat, is approximately might be varying 1 rupee kilo, and the variation of processing is additional cost, but it can give your aging factor, it can shift to 10 to 15 years. It is the most interesting part. क्या आपकी एजिंग फैक्टर के लिए आप पता नहीं कितना खर्चा करते हैं, कितना कवर करने के लिए करते हैं. Our rate can be natural way, and that's a fact. You can get the report of that. If I talk slightly more, A2 milk, I was just talking with you, कि विश्वास क्वालिटी पे एश्योरेंस अगर दे सके. एक ग्रुप आपने डेयरी में काम किया, एक ऑर्गेनिक फूड और देसी गाय दूध कम देगी
अगर उसका प्रॉपर प्रोसेस करेंगे तो वो भी 7-8 किलो तक जा सकती है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। और वो दूध 150 रुपये लीटर बिकता है, 40 रुपये वाला दूध, क्योंकि आपकी सोच और मेमोरी के ऊपर उसका इम्पेक्ट आता है। और थोड़ा सा मैं आगे बात करूं तो उसके आगे की प्रोसेसिंग कर ले तो वो कितने गुना मल्टीप्लाई होगा। उसके जितने भी एग्रो प्रोडक्ट बनाए, हम बात करें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन प्रोड्यूसिंग जोन है, हम उससे अगर हम जापान में बात करें तो टोफू उनके हर मील का मेजर पार्ट है। व्हाई कांट वी स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इनिशियली। और जब अगर एक ग्रुप, अच्छे ग्रुप विद क्वालिटी एश्योरेंस कोई चीज़ लॉन्च करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इज़ वेरी हाई। और सपोर्ट जो भी चाहिए, स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि एडिशनल सपोर्ट दीजिए, एडिशनल प्रोटेक्शन दीजिए, जो भी सपोर्ट चाहिए दीजिए। और उस सब के बाद हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको जितने क्लस्टर्स बनाने हैं किसी भी प्रोडक्ट के, हम उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स सपोर्ट करेंगे। और उस सपोर्ट से आप इनिशियल शुरू करिए। और जितने प्रोजेक्ट चाहिए, हमारे जीएम यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर उसमें भी कभी डिले हो, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज का कॉन्सेप्ट हमारे चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये और कहीं नहीं मिलेगा। हम अनडेवलप्ड लैंड दे रहे हैं जो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा, और उसको सीएफसी में बनाइए। मैं अभी देख रहा था, मैंने उस दिन अपनी जब ऑनलाइन का टॉयस, अब वुमेन से बेहतर टॉयस के बारे में और कौन सोच सकता है कि बच्चे को किस टाइप का टॉय दें कि वो खेलने के साथ उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन में माइंड डेवलपमेंट भी हो। भारत की परंपरा टॉयज केवल खेलने के लिए नहीं होती थी, उसके साथ उसको शिक्षा भी मिलती थी। लेकिन कुछ कल्चर ऐसा आया इन बिटवीन कि हम पूरा चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन मैं जब बात कर रहा था सॉफ्ट टॉयज की, तो मैंने देखा कि चाइना से हम आधी कीमत पे सॉफ्ट टॉयज यहाँ बना सकते हैं, 50% ऑफ चाइनीज कॉस्ट। बट यू हैव टू इनिशिएट योरसेल्फ। Initial, I can only give 100% assurance that all possible support for the industry we will provide. We will provide higher subsidy than जो दूसरे एंटरप्रेन्योर को मिलती है, मेल एंटरप्रेन्योर को, उससे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर पॉलिसी सेज दैट वी हैव टू सपोर्ट सो दैट इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो आपके कंट्रीब्यूशन से एडिशनल ग्रोथ होगी। हम 5 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो एडिशनल इकोनॉमी डेवलपमेंट का पार्ट होगा जो अभी बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर आ रही है। जैसे ही आप बढ़ेंगे तो वो तो सीधा मेरा नेट ग्रोथ बढ़ेगा। और दुनिया में एक्सपोर्ट का, अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं मध्य प्रदेश में पहली बार, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जितने भी हर्ब्स हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे करी जाए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से एक सपोर्टिंग पूरी टीम खड़ी करी है, जो आपको एक्सपोर्ट में क्लाइंट ढूंढने से लेके एक्सपोर्ट का टाई अप करने तक बात करेगी। बट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड एश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। Now these tie-ups are available, but you'll have to come yourself. कि सर वी वांट टू डू दिस थिंग,
We need the support on this angle, we need on technical support, we need on financial assurance support, we need on marketing support, we need on training support, we need on procurement की standardization, we need support on quality certification, lab support. हम इन सब के लिए तैयार हैं और ये सब हम फुल गारंटेड वे से देंगे, प्रोवाइडेड आप लोग आकर अपने आइडिया को ओपनली शेयर करिए और आप अगर चाहें तो आई कैन सपोर्ट ए बिट ऑन कमिश्नरी वाइज, यू ऑर्गेनाइज ए शो, स्पेंड द टाइम. कमिश्नरी लेवल में जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, फिर उसके बाद जबलपुर, भोपाल, फिर आपके रीवा, सतना आ गया, फिर अगर उधर सागर चले जाएं तो ऐसे हर कमिश्नरी में आप शो करें और शो में कोशिश ये करें कि थोड़े से कॉलेज में फाइनल ईयर के बच्चों को भी बुलाएं, because they have much bigger dream. They have certain less of limitation. उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, उन्हें परिवार के मदर फादर भी इनिशियली 2-4 साल ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि एक एज के बाद बहुत सारी आपके साथ लिमिटेशंस भी आती है, तो उनको भी बुलाएं और उसमें भी एक्सरसाइज करें. और हर फील्ड में पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ है. आज की तारीख में एक और सेइंग है कि दुनिया के बेस्ट मैनेजमेंट को इंडियन वुमेन का मैनेजमेंट माना जाता है, बिकॉज वो लिमिटेड रिसोर्सेस से परिवार के कितने कॉन्सिक्वेंसेस मैनेज करने की स्किल है उसे रिकग्नाइज नहीं करते, बट ये तो सही, यू कांट डिनाई टू दैट. अभी मैं इसके पे वहाँ कॉलेज में 70% गर्ल्स बैठी हुई थी, तो मैं वही बात कर रहा था कि जो स्किल क्यों वुमेन को बेस्ट MBA के बराबर का मैनेजमेंट का स्किल माना गया, क्योंकि उसे सब प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालना आता है. परिवार के डिफरेंट फोर्सेस, एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट आइडिया, बट कैसे वो मैनेज करती है बिना कुछ बताए, सब कुछ अपने मर्जी का करवा लेती है. चाहे कितनी ही बात हो जाए आखिरी में तो क्या कहोगे, ये स्किल मैनेजमेंट स्किल ही है ना. यू हैव द बेस्ट ऑफ द स्किल, बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इकोनॉमिक फॉर्म. That skill converted into economic form is called business management. होम मैनेजमेंट की स्किल वही है, स्किल में कोई अंतर नहीं है. मैंने 28 साल इंडस्ट्री चलाई है, उसके बाद 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मैंने ये महसूस किया, आने के पहले लगता था यार कैसा होगा राजनीति, लेकिन मैनेजमेंट के रूल्स चाहे बचपन से लेके आखिरी तक कॉमन है. जस्ट टू लिसन मोर, जस्ट टू थिंक द प्रॉब्लम इन ए डिफरेंट वे. प्रॉब्लम को अगर आपने समझ लिया तो सॉल्यूशन आधा अपने आप निकल जाता है. प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है. और एक और सबसे बड़ा, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड द राइट टाइम फॉर एनी इंडियन पर्सन टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस, बिकॉज मोदी जी हैज़ गिवन ए वन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि जो 50 से 60% चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था, अभी कॉमन आदमी भी उस इंपोर्ट
स्टेट प्रोडक्ट के बजाय इंडियन प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने इकोसिस्टम बना दिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में हम लेने के पहले 2-4% फालतू भी लग जाए तो इंडियन प्रोडक्ट को प्रीफर करने लगे। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। फिर अभी ये जो भी हो गया, ट्रैवल के रेस्ट्रिक्शंस, अपने आप को आइसोलेशन और इन सब को, और कई बार मैं एक ही बात बोलता हूँ और उसका जीता जागता उदाहरण मोदी जी को मानता हूँ, शिवराज जी को मानता हूँ कि सबसे बड़े डिजास्टर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलना। कितना बड़ा डिजास्टर था, कैसे मैनेज हुआ? 6 महीने में वैक्सीनेशन क्रिएशन हो गया। 50 साल लगे पोलियो ड्रॉप लाने को हमारे देश को, 50 साल 2 बूंद पोलियो ड्रॉप लाने में। हम अभी भी कई जगह देखते हैं बच्चों को हैंडीकैप और कैसा फील होता है, लेकिन 6 महीने में बनाना। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अगर हमारा डिटर्मिनेशन पक्का है तो दुनिया के फास्टेस्ट वे से उसका वैक्सीनेशन लगाने का काम एग्जीक्यूट करना। अगर ये पॉसिबल है तो आई बिलीव दैट एवरी इंडियन हैज़ दैट कैपेसिटी कि अगर वो डिटरमाइन कर ले कि हमें ये करना है तो वो 100% होके रहेगा। एंड मुझे सिर्फ एक ही लाइन समझ में आती है कि अगर हमारा इरादा पक्का है, हमारी सोच 100% पॉजिटिव है, तो वी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और जो आप सोचेंगे वो दुनिया आपको करने देगी और आप उसे सफलतापूर्वक करेंगे। और बाकी सपोर्ट के लिए मैं, मेरी टीम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर टाइम आपके लिए तैयार हैं। और कोई क्वेश्चन आंसर को मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, जिसके भी मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ जब तक आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज ख़त्म नहीं होगी तब तक बैठा रहूँगा। अगला कार्यक्रम कितना ही लेट हो मुझे उसकी चिंता नहीं है, बट आई डोंट वांट टू लिव एनी वुमेन अनआंसर्ड और गोइंग टू होम मतलब unsatisfied. I want you to get all questions sorted down so you can plan much better way your dreams, जिसको अपन सब मिलकर पूरा रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आज एकत्रित हुए। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और पूरी फिक्र की टीम, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे एक्स नेशनल हो, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर आपने गैदरिंग करिए, बेटर वे से ऑर्गेनाइज किया, इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। So thanks for the enlightening and inspiring session. A round of applause please for the... सर, आप राह तो दिखा ही रहे हैं, बट राह का निर्माण भी कर रहे हैं। Thank you so much. Ficky Flow is proud to be joining hands with the MSME initiative led by our Honorable Minister, Shri Om Prakash Ji Saklecha, in bridging the gaps and facilitating existing and aspiring women entrepreneurs in all possible ways and means. Honorable Sir, after your enlightening discussion with us at Bhopal, we have been gathering queries from our flow members. I would now like to call upon all these women to put forth their queries. I would first like to call upon Palak Hasnandani. Please introduce yourselves first and the sector you are from, and then ask the question. Good afternoon, everyone. I am Palak Hasnandani, and I have a startup with the name Fruits of Patience. We deal in exotic dry fruits. So this is my new startup, and I am facing challenges in B2G market, export linkages, logistic, warehousing. These are my challenges. Sir, also I would like to request that if you can arrange a workshop where we are
where we know that how to do a trade-specific capacity building ka workshop so that, we know what are the opportunities available and we can avail them. आपने एक बार पहले भी किसी ने मेरे से ड्राई फ्रूट के बारे में बात करी है. आई एम नॉट श्योर दैट आपने ने करी थी. We had conversation at Bhopal. We had a conversation, yes. अभी हमने ये जो 4-5 लॉजिस्टिक हब बना रहा हूँ मैं, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टोरेज कैपेसिटी हम क्रिएट कर रहे हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर में, जिसमें हम 90% ग्रांट दे रहे हैं. आप भी अगर 5-7 टीम का बनाकर कुछ प्रपोजल देंगे तो हम आपको 90% सपोर्ट दिला देंगे. इट मीन्स योर कास्ट इज ओनली ऑपरेटिंग कास्ट. दूसरा, वी आर टॉकिंग विद द एयरवेज, रेलवेज, because these are the two where you get more than 1 crore passenger in railway and more than, as on today, I think about more than 10 lakh in aviation per day. We are trying to convince them that instead of giving junk food, why can't we give this quality food with a slight variation of the cost? I am in dialogue with the ministry in Government of India that let us subsidize a part of that element in direct or indirect way so that we can meet the cost and create a more healthy population of the country. Because after, if we get any disease, because I always say, and I'm running a show on a specific thing, that preventive is better than treatment. Prevention costs only 2-3% than the treatment cost. And I'm driving a very big drive on this affair, तो उसमें मैं इस विषय को ले रहा हूँ और बहुत जल्दी इसमें आपको मिलेगा ये सपोर्ट. तीसरा है कि उसके डिफरेंट फ्लेवर्स का जो आप कह रही हैं, उसका एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा. अगर इंडिया के 8, 10, 15 डिफरेंट वो हों, नहीं होगा तो हमारा जो मध्य प्रदेश का जो स्टॉल्स लगता है आजकल कई देशों में, उसमें हम आपको कनेक्ट कर देंगे ताकि आपकी एक्सपोजर थ्रू आउट द वर्ल्ड और हमारे सपोर्ट सिस्टम में, और मैग्नैनी कुड आल्सो मार्केट दैट थिंग. We have more than many number of showroom of Madhya Pradesh government that can also support you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, I'm sure so many people here must be thinking, when you were showing the policies, many of them were for SC, ST. So is it like that they are only for them the subsidies that you provide? नहीं, नॉर्मल वुमेन को भी सब्सिडी है, मेल से ज़्यादा है, बट SC, ST की फीमेल है तो उसको और ज़्यादा है. तो ये तो प्रोसेस है कि भैया जितना वीक है उतना ज़्यादा सपोर्ट देके उसको एटपार करना. दिस इज़ द थीम ऑफ जनसंघ फ्रॉम बीजेपी, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के उदय की लेके अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का हिस्सा है. Sir, last thing. Sir, many of them, they must be thinking that if we want to approach you, so is there any portal or any helpline number where they can connect and... नहीं, we have a site. आपको साइट की डिटेल दे देते हैं. उस साइट पे आप कोई भी क्वेरी डालेंगे, यू विल गेट द आंसर. इवन मेरी भी ऑफिशियल मेल की साइट भी है, उसमें भी करेंगे तो हर 3-4 दिन में आपको उत्तर आएगा. Thank you so much, sir. We'll share that. And sir has also told me that if anybody has some queries, they can also connect with him during lunch. No, I'll sit here because वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है. अभी जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कुछ इको प्रॉब्लम आ रही है माइक सिस्टम में. आई एम रियली सरप्राइज्ड विद सच एन एक्सपेंसिव होटल
The sound system is so poor that we can't communicate. Sir, I would now move on to Ms. Kinjal Bansal. Ms. Kinjal Bansal. Very good afternoon, sir. Myself, Kinjal Bansal. Louder, please. A very good afternoon, sir. Myself, Kinjal Bansal. I am director at Crimtech Private Limited. Our company was incorporated at SEZ Indore on 8th of Feb. And we got all the permissions from MSME for the land acquisition and the machinery and everything. We moved forward, but usually, sir, an industry needs an year time to get incorporated and become functional. But due to inconsistency in MSME policy, it is having an impact on the industrial area. And we as an industry is being denied for the subsidy policy. So now we are facing substantial issues. IT company ना, आप IT company की बात कर रहे हैं ना, या MSME की बात कर रही हैं? MSME, and we are set up in SEZ area, Pitampur. SEZ में कुछ अलग टाइप क्या अंतर क्या है? सर जो MSME की पॉलिसीज हैं in 2019, जो 2019 की पॉलिसीज हैं, एक सेकंड लेट मी SEZ में अपन जो नॉर्मल पॉलिसी का सपोर्ट देते हैं वो नहीं देते, SEZ की अलग पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी, बिकॉज सब्सिडी एक पॉइंट पे मिलेगी आपको, आइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. No, sir, in the state government policy only, in 2019, our company was eligible for the subsidy. So we incorporated in Feb, but there was a sudden change in the policy by August. By 30th of August, that the new policy, 2021. In there, it is said that in the units that are being set up in SEZ, they are denied the subsidy. मैं स्पेसिफिक केस को चेक करवा लूँगा, Sure. क्योंकि दो अलग अलग पॉलिसी अलग अलग सिस्टम के लिए है. क्या होता है, कई सब्सिडीज ओवरलैप करती है, इसलिए ये बना होगा. कोई केस होगा तो हम स्पेसिफिक केस के बारे में चर्चा कर लेंगे. We'll discuss at the My point is very simple, sir. Like we have been incorporated in Feb, right? So it's not been a year, so we are not operational yet. And in the midway, we are in a standstill. So I would just like you to look into the matter. I'll certainly look into matter. आप Yes. इंडिविजुअल मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर को अगर अपन कॉमनली डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा यूजफुल होगा. More ladies will get benefited. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Now we move on to Garvit. Yeah, Kinjal will connect you separately. Now I move on to Garvita Jain. Hello. Good afternoon, sir. Myself Garvita Jain, and I am into jewelry business. My question is, are there any support schemes relating to technology adoption and upgradation? If so, we can avail them. Also, is MSME department promoting skill development in the domain? Skill manpower is limited in the region. So, देखिए, तीन क्वेश्चन आपके आए. जी सर. एक आया टेक्निकल सपोर्ट. adoption and technical support. We are giving, I have already told. Yeah. In this business also, if it is on the manufacturing side, we will support with the subsidies also. Okay. Thank you. The third question is training the manpower. Yeah, exactly, sir. So if there is a cluster, if there is any specific requirement at a larger scale, we can open the institute. I am opening the institute. अभी मैंने जबलपुर में 200 करोड़ रुपए का ग्रांट लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. Okay. फॉर ट्रेनिंग द मैन पावर. इंदौर में मैं अभी फर्नीचर क्लस्टर जो बना रहा हूँ, उसमें 200 करोड़ रुपए का साथ ही में मैन पावर ट्रेनिंग फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का क्लस्टर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ 20,000 नए एम्प्लॉय चाहिएंगे. तो 10,000 तो मैं ट्रेंड फ्रॉम द मार्केट उठाऊंगा. 10,000 की मैं ट्रेनिंग जब तक ये इंडस्ट्री बनेगी
तब तक उन्हें ट्रेन करूँगा, क्योंकि जब तक सभी इकोसिस्टम साथ नहीं होता है तब तक बिजनेस सक्सेस नहीं होता है. Right, sir. So we are doing that also. And the last question was, Also, is MSME department promoting skill development? Digital development, right? Digital development, promoting skill development in the domain. Digital development, right? She's talking about digital development. E-platform. E-platform. no, e-platform I have already told. Yes. We have tie-up. We have a tie-up Huh. for 6 months. They will do all your marketing free of cost without charging any commission, this Flipkart and this thing. They will also give you training. They have signed an agreement that they will train 5,000 specific entrepreneur how to place digitally your product on their platform. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Yeah, let us move on to Neha Badera. Hello. Namaste, sir. I'm Neha Badera. I am into manufacturing of kids' apparels, and I've been into this industry since last 4.5 years. So first thing which I want to know is, what form of financial assistance is given in this industry? Sir has definitely shared a presentation on it, but if I understand that correctly, I think any garment industry which is established like August 20 and earlier that is not included in that under that policy. So is there any form of financial assistance covered? नहीं, आप अगर अपने यूनिट का एक्सपेंशन में भी डालेंगे, Okay. तो 25% ऑफ द लास्ट आपने जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया था उससे ज़्यादा होने पे आप नई इंडस्ट्री की कैटेगरी में उतने जोन में आएंगे. Okay. Okay. क्या यही पॉलिसी है ना? This is the minimum 40 lakhs they have to invest. That's it, and they can get the same subsidy. Okay. For the expansion. Okay. Okay. And thank you so much for that. And the other question is that there was a notification regarding giving preferences to MSMEs regarding the public procurement. Yes, so we are coming out in the next 10 days. Okay. Another policy, procurement policy. We are changing lot of changes where the security deposit, where the preference, where the local manufacturer to be given first priority. All those are coming out. Maximum within this March itself, you'll see on the site. Okay, so if we want to avail that, we have to refer the website for that, right? Yeah, within this March itself, you'll see on this website. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, the website really helps a lot. There is a lot of information available on the website. Thank you. Thank you so much. Now I move on to Komal Tulsian. Komal, please. Yeah. Can she have the mic, please? Good afternoon, sir. I am Komal Tulsian. I am running a powder coating plant in Rao since 2017. But after my husband's demise due to COVID, I am facing a problem in marketing aspect of the business. So is there any marketing support provided for the startups and MSME by the means of trade fair? By what way? Pardon? No. By the way of trade fair. Yeah, we can. Any trade fair you want to join, we can specifically ask. We have different trade fairs. पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा कोरोना के कारण बंद है, वरना हम नेशनल भी करते हैं ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल भी करते हैं. लेकिन पाउडर कोटिंग आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा लोकल इंडस्ट्री की नीड बेस्ड रही. Especially for automobiles and furniture business. Furniture, all the domestic appliances, grey product जिसको आप बोलते हैं, उन सब में ज़रूरत है और यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज आ रही है और स्पेशली this furniture cluster and toy cluster will take about
18 months to come into genuine production cycle. वहाँ बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है पाउडर कोटिंग की, क्योंकि अब जो फर्नीचर की लाइफ है, जो पहले 15 से 20 साल होती थी, वो अब 3 से 5 साल में आदमी चेंज चाह रहा है। और वो चेंज में वो एस्थेटिक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, फिनिश। तो आपकी ये दिस पाउडर टेक्नोलॉजी, पाउडर कोटिंग टेक्नोलॉजी विल हेल्प ए लॉट. It's a futuristic business, but you'll have to face in between slightly time. But any support you need, we can always talk. Lot of new automobile companies are coming. Yes. E-vehicles. अभी मध्य प्रदेश में 3-4 ई-व्हीकल के प्लांट आ रहे हैं. मैं ही उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली, और इसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर. तो ये जितना भी, और अभी ये और फास्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन डिस्प्यूट. क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो ई व्हीकल पे फोकस बढ़ेगा. गैसेस यूरोप में ख़त्म हो जाएगी तो उसका बर्डन पड़ेगा. तो वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. Okay, sir. Thank you you so much. A lot of inputs, I hope, for you, Komal. Yeah. Now I would like to invite Ragini Shirali. Good afternoon, all. I am Ragini Shirali. I'm an entrepreneur, first generation entrepreneur, and I established Libra Biotech in 2007 at Pithampur. We manufacture biological products that are that can be used and substitute the chemicals, hazardous chemicals. Sir, I just wanted to know how ministry can help me. We are fighting the constantly rising pricing of our raw materials because all are imported. We import from Japan, Korea, and Norway, and most are bioenzymes, amino acids, sodium percarbonate. And so we are always facing problem, the constant rising price of our raw materials. And second, different regulations. There are various regulations of governments for marketing of biological products. And thirdly, we also want to venture out for exports because we are purely chemical free. It's totally eco-friendly products. So I need help in that area also. Thank you. For export, we are also making Government of India Export Promotion Council is there. But we are also making in our state a Export Promotion Council. Every district we are also going to have this export promotion के लिए एक autonomous body बना रहे हैं, तो आपको support करें. रहा second import के chemical की price बढ़ रही है, तो I'll suggest the other way round. You talk to any specific chemical which CSIR lab can support in developing Indian alternate for that. Because I can't control Japan's pricing. I can't give you a false hope as well as. Because it's very easy to give a wrong hope and create your problems multiply. So that you'll have to understand that what can we do the partly indigenization of the part. Because all these labs are extremely very good labs. I have selected many products out of these labs. And the third was your export promotion we have talked about government regulations. Regulations में तो आपको specific complaint देनी पड़ेगी, शिकायत. उसमें क्या support? काफ़ी rules हम reduce कर रहे हैं. जैसे पहले हर साल renewal license होता था. Environment का green प्रोडक्ट के लिए भी एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस की थी, वो सब हमने अभी ख़त्म कर दिए. अभी हमने हमारे ही जीएम को ऑथोराइज कर दिया कि ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले हैं जिन पे रेड प्रोडक्ट ना हो तो वो खुद ही फर्स्ट डे ही 5 साल का क्लियरेंसेस दे दे. तो ये तो प्रोसेस का प्रक्रिया है. ट्रेड स्पेसिफिक को स्पेसिफिकली चर्चा करनी पड़ेगी. इट कैन नॉट बी कॉमनली आंसर्ड. Okay, that will be. Thank you. Yeah, thank you.
Now we move on to Rinki Bakra. Good afternoon, sir. My name is Rinki Bankda. I am director in Syncom Formulations India Limited. Sir, हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर हैं, पीतमपुर बेस्ड आउट ऑफ. सर, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक MEIS सब्सिडी देती थी टू प्रमोट एक्सपोर्ट. वी आर इनटू 100% एक्सपोर्ट सर. सर, अभी वो MEIS सब्सिडी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से डिसकंटिन्यू कर दी. उसकी बदली उन्होंने रॉटेप स्कीम लॉन्च करी है सर, जिसके रेट्स अगस्त में अनाउंस हुए थे, बट दे लेफ्ट फार्मा सेक्टर आउट ऑफ इट. फार्मा सेक्टर का रेट सर आज 1.5 साल होने आए, ऑलमोस्ट अनाउंस नहीं हुआ है सर. उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वी आर नॉट बीइंग कॉम्पिटिटिव एनी मोर सर. चाइना इज़ प्रोवाइडिंग फार्मा एट वेरी चीप रेट. दिस सब्सिडी वॉज समथिंग विच वॉज गिविंग अस कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहा था सर. How much percentage wise? 3% sir. Huh? 3%. 3%. Okay. Give me the return thing, because it's a specific government of India's issue. Whenever I'll go to Delhi, I'll talk to the Chemical and Fertilizer Ministry that how can they give either that and or from the Export Promotion Council, either of the thing. You'll have to justify the cost variation and give me the sheet, because it cannot be answered in a casual manner. It is a trade specific, product specific problem, so we'll have to discuss at a specific level. Sir, I've been writing to Pharma Export Promotion Council and central government, the finance minister, the prime minister. I've been writing for past 6 months email. I would write to your industry, I would write to your ministry and hope for the support. But sir. yeah, now definitely you are going to get the support. मैं कोशिश करूँगा. किसी और ने उत्तर नहीं दिया उसके लिए मैं responsible नहीं हो सकता हूँ. Thank you sir, thank you so much. We look forward to your support and thanks for your support, sir. Now I move on to Vandana Gujarati. Mic. Good afternoon, sir. माइक पास में रख लीजिए, माइक चालू होगा, पास रख लीजिए. इतनी दूर से काम नहीं हो रहा है. Good afternoon, sir. Myself, Vandana Gujarati. I'm an interior designer working from last 25 in Indore. I'm aspiring entrepreneur. I want to start in furniture industry. I don't have a question, but I need a single window system for documentation and other procedural technicalities. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया. Should I Yeah. answer? Yeah. आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं. और सर मैंने एक और फर्नीचर क्लस्टर में सर मुझे एक और बात करनी है कि वी नीड मेंटरशिप, पीरियोडिकल मेंटरशिप फॉर periodical mentorship for business strategies, marketing. Actually, we need periodically, not a single way. Yeah. Thank you. हमने फर्नीचर क्लस्टर में 1 लाख स्क्वायर फीट का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना है, डिस्प्ले कम फैसिलिटी सेंटर. वहाँ हमने डिज़ाइनर्स को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू में जगह देंगे, फिर जो रेंटल तय होगा पर स्क्वायर फीट का वो देंगे. और लाइव वहाँ पे काफ़ी कॉन्टेक्ट आएंगे. NID से हमने टाई अप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड फर्नीचर. आई एम ट्राइंग टू सेटल विद इंदौर IIT फॉर फर्नीचर्स डिज़ाइन फॉर ह्यूमन नीड. बिकॉज अभी तक इंडिया में आपको 4 घंटे बैठने के लिए कुर्सी कौन सी डिज़ाइन होनी चाहिए, 6 घंटे के लिए कौन सी होनी चाहिए और आधे घंटे के लिए कौन सी होनी चाहिए, और 5 मिनट में किसी को रवाना करना तो उसके लिए सामने कौन सी कुर्सी है. Exactly. तो वो डिज़ाइन का हम कॉन्सेप्ट करके वो वहाँ ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद वहाँ डिज़ाइनर्स को ऑनलाइन हम एक्सपोजर के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. क्योंकि हमारी भी ज़रूरत है कि पूरा माना किसी ने डिज़ाइन के लिए बोला, ऑनलाइन उसने लोड कर दिया, यहाँ का डिज़ाइनर ने उसको लिया, अपना डिज़ाइन सबमिट किया और ऑनलाइन बिजनेस किया. तो ये एक अपॉर्चुनिटी बढ़ने का, क्योंकि मार्केटिंग में ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कि हम कितना बड़ा एक्सपोजर देते हैं. क्योंकि फर्नीचर में 30 से 40% कॉस्ट रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें एक्सरसाइज ये किया कि वेस्टेज को रिसाइकलिंग का सिस्टम बनाया.
एवरी प्रोडक्ट, बिकॉज नेचर या एनर्जी का सोर्स ये कहता है कि एनर्जी इज नेवर वेस्टेड, इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को अपना के ये बनाया है, तो इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। Need single window system for all the documentation, then the facilities grant. भैया वहाँ हम सिंगल ही दे रहे हैं हम तो। अब आपका इस सिंगल विंडो में आपका कंसर्न क्या है, कि क्या सिंगल विंडो का मतलब क्या है? सर जो भी जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन, देन अदर प्रोसीजरल फैसिलिटीज, ग्रांट्स, जो भी आप लोग हम लोगों को ग्रांट्स वगैरह दे रहे, वो एक सिंगल विंडो सिस्टम तो वो तो सब ऑनलाइन हमारी साइट पे सब उपलब्ध है। अभी बुक कुछ किताबें भी हम लाए हैं जिनको ऑनलाइन के बजाय फिजिकल कॉपी चाहिए, तो हम लाए हैं, अभी आपको दे देंगे डिपार्टमेंट के लोग, आप ले लीजिएगा पॉलिसी के सब डॉक्यूमेंट। सर मेरा इधर एक चीज़ है कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो या तो कुछ अवेयरनेस की स्कीम्स अगर आप चला पाए। नहीं, अवेयरनेस की स्कीम के लिए अपन यहाँ बैठे हैं। दिस इज द ओनली अवेयरनेस कैंप। हाँ ये तो है ही, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में करिए ना। मैंने बोला इसका सेकंड फेज है 10 कमिश्नरी में, जो 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को बुलाओ, होल डे प्रोग्राम बनाओ, मेरी पूरी टीम आएगी और इससे बेहतर वे में प्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। I think Ms. Ujjwala ji also has some questions she wants to No, ask. I would just like to request Meetu that now this should be like an ongoing program where you should, have a sort of a session where everyone is with the presentation, so everyone is aware of all the things, all the schemes that are there, and they can also ask and clear their doubts. So. आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट पे वुमेन एंटरप्रेन्योर की, फिके की, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, उस पर पूरा हमारा प्रेजेंटेशन की कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम दे देंगे। बिकॉज व्हेन यू स्लाइटली मूव आउट टू द रूरल बेल्ट, वही बात हिंदी में जल्दी और बेहतर समझ में आती है, क्योंकि उसके भाव समझ में आ जाते हैं। इंग्लिश में इट लुक गुड, बट एट टाइम कई बार पूरा उसका समझने में कई बार रूरल बेल्ट में प्रॉब्लम आएगी। आई डोंट से दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेज, बट सर्टेनली मदर टंग में हर चीज़ बेहतर समझ में आती है। तो हम दोनों में प्रेजेंटेशन की कॉपी और ज़्यादा बारीकी और उससे बना के इनको दे दीजिए। आप अपनी वेबसाइट पे दीजिए, और जो भी सेमिनार करें उसके पहले लोकल लेवल पे एक बार उन्हें समझा दीजिए, तो वो और ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बना के लाएंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, तब तक एक्चुअल चीज़ समझ में नहीं आती है। थैंक यू सो मच सर। सर अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं और सारे क्वेश्चंस ले लूं। मैंने आपको बहुत पूरा फ्रीडम दिया है। हाँ, सर। जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे मैं बैठा हूँ। हाँ सर, सबसे पहले मैं राशि मंत्री, बट एक रिक्वेस्ट है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। हाँ, बस क्वेश्चंस को प्लीज रिपीट मत करिएगा। वॉट एवर सर हैज आंसर्ड। राशि मंत्री, इज शी देयर? Okay, Shruti, yes. Please raise your hands, whoever wants to ask, but please do not repeat the questions. नमस्कार सर, मैं आर्किटेक्ट श्रुति पुरोहित, 9 स्क्वायर्स आर्किटेक्ट्स इंदौर से। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या कोई स्पेशल पॉलिसी है फॉर वुमेन आर्किटेक्ट्स, स्पेशली जो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, स्पेशली जब हमको एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ख़रीदने होते हैं, तो क्या इसको देखा जा सकता है यदि नहीं भी है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट की EMDs होती हैं, काफ़ी सारा अमाउंट वहाँ पे स्टकअप हो जाता है फॉर मंथ्स टुगेदर।
और जहाँ तक मैं समझती हूँ हम लोगों ने MSME में अपने आप को रजिस्टर किया था विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो MSME में रजिस्टर्ड हैं उनको ये EMDs जो हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगी। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस में टेंडरिंग में अप्लाई करते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो इसको डिनाई कर देते हैं और ये जो एडवांटेज है वो हमको नहीं मिल पाता। तो दोनों क्वेश्चंस पे मैं आपसे देखिए, आप स्पेसिफिक कंप्लेंट दीजिए मुझे कि MSME को टेंडर फी के लिए, सिक्योरिटी फी के लिए वेवर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है और स्टेट गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है जी। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप टेंडर के फर्स्ट डे ही अगर आप हमें लिख देंगे तो हम उस डिपार्टमेंट से बात कर उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। Sure. दूसरा आया कि आपको अपने सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट खरीदना है, तो IT में जब आप ऑफिस सेटल करते हैं तो IT इंडस्ट्री की अलग से हमारी पॉलिसी है, चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में का पार्ट है IT मिनिस्ट्री हमारा ही, तो उसमें हम आप IT रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें भी हम 40% ग्रांट देते हैं। तो यू विल हैव टू सेट अप ए ऑफिस एंड डू इट इन ए थिंग। अब आप अगर केवल घर से या पार्ट टाइम कर रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आप रूटीन में करेंगे तो IT में आप रजिस्टर करवा लें। सर एक्चुअली हमारा IT इंडस्ट्री नहीं है, दिस इज लाइक आई एम एन आर्किटेक्ट। आई अंडरस्टैंड, इंटीरियर डिजाइनर है, Architect लेकिन आप हूँ, IT में रजिस्टर करवा के सर्विसेज दे रही हैं, ऐसा करवा लेंगे तो हम IT से आपको ग्रांट दे पाएंगे। ओके, ठीक है। IT इंडस्ट्री के लिए हम सॉफ्टवेयर में भी कुछ ग्रांट देते हैं, श्योर, बट वो IT मिनिस्ट्री से देंगे, MSME से नहीं मिल पाएगी। सर तो मैं ऐसे समझ रही हूँ कि जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको, विमेन आर्किटेक्ट्स, उनको IT इंडस्ट्री से वुमेन और मेन में वेरिएशन नहीं है आर्किटेक्ट्स में अभी। जी जी, क्योंकि इसमें अभी कभी कहीं कोई डिमांड भी नहीं आई ऐसी, तो वो कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन केवल आर्किटेक्चर के बजाय IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आप आएंगे कि हम उसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये आर्किटेक्ट नहीं मिलेगा। जी जी, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय जी जी आंसर। जी, तो उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यूज करना पड़ेगा। श्योर सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Or anybody else has any questions? I'm Sangeeta. Good, nice way of presentation. मैं एक छोटी सी लाइन कहूँगा, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर सिटिंग एनीबॉडी, बट एक बहुत साधारण सी बात है, पढ़े लिखे अनपढ़ों से बात करने में बहुत तकलीफ आती है। मैंने पहले बोल दिया नॉट फॉर एनीबॉडी सिटिंग है। अब नहीं, लेट मी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना है, उत्तर भी आप सुनिए। हर चीज़ की आज की तारीख में ऑनलाइन हर चीज़ को आप अप्लाई कर सकती है, आपके क्वेश्चंस डाल सकती है। मैंने बोला मेरी अपनी साइट भी है, मेरे डिपार्टमेंट की साइट भी है। ऑनलाइन क्वेश्चन का आंसर अगर स्पेसिफिक टाइम में नहीं आएगा तो ही इज़ अकाउंटेबल, आंसरेबल, और वो डिनाई नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम हम लोगों की क्या है, हम ज़बानी बात करना चाहते हैं, हम अकेले ऑफिस में जाके कान में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दूसरा कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, बाकी हमारे सब कॉम्पिटिटर दबे रहे, मैं अकेले उसका प्रिविलेज ले लूँ। अगर हम इकट्ठे जाके 5 आदमी बात करेंगे तो डिपार्टमेंट अपने आप ज़्यादा केयरफुली सुनेगा, क्योंकि टेबल के जिस साइड में ज़्यादा पावर होगी उसकी दादागिरी चलेगी। ये लॉ ऑफ नेचर, ये मेरा नेचर नहीं है।
तो आपको अपनी पावर क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई करो। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी गारंटेड। विदाउट आप मुझे डिटेल देंगे। देखिए, ये जब अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो कॉमन जिससे सबका कंसर्न हो वो इशू पे चर्चा होती है। जब स्पेसिफिक बात होती है कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के लिए मैंने जो बोला कि भैया व्यक्तिगत कभी भी आप बताएंगे, कागज़ देंगे, मुझे भी उस कागज़ को एग्जामिन करवाना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम के बिना, ऐसे तो हजारों इंडस्ट्री जो चल रही है वो कैसे चल रही है, मैं भी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। Sangeeta, we'll do one thing, we'll take it offline and we can have a discussion or one-to-one later on. Discussion में ही इनके discussion we can have. And we now have some all electronic mediums also wherein we can send emails or apply online, and that gives a faster return. Thank you. Yeah. Any other questions? Namaste, sir. I am Bhavna Aluwalia. I am an interior designer, editor of a magazine called Design Digest. And I am also a green entrepreneur. I have just started this Beyond Bouquets, जो आपको भी I think पसंद आया होगा sir. I have just a small question. जब हम MSME की बात करते हैं तो the first M stands for micro. Can it not be MMSE as in mini, micro, SME? जिसमें कि मतलब देखिए आप खुद कह रहे थे कि घर से शुरू होता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। सर मतलब जो आपका माइक्रो का डेफिनेशन है दैट इज 40 लाख से शुरू होने वाली इंडस्ट्री कम से कम। तो सर अगर नहीं, माइक्रो में 40 लाख की कोई, माइक्रो तो में वो 40 लाख नहीं है सर, जो अभी मैंने आपका ही समझा। ना, माइक्रो में 40 लाख की कोई वो नहीं है। माइक्रो कैन बी इवन 10,000। ओके सर। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो लेडी है डज शी हैव एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, एज इन अगर कोई 40 लाख स्ट्रॉन्ग फीमेल है तो उसको तो कोई हेल्प की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है। मतलब दे ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर किसी के पास प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इससे नीचे वाले लेवल के लिए क्या आपके पास? माइक्रो इज बेसिकली 200 रुपए का काम भी करेगा तो उसको रजिस्टर करेंगे। माइक्रो में, ओके सर, माइक्रो में स्टार्टिंग लिमिट इज नॉट देयर। माइक्रो स्मॉल में शुरू होती है 1 करोड़ से ऊपर। ओके सर। और अभी जो मीडियम में आ गई अप टू 50 करोड़ की इंडस्ट्री। और 50 करोड़ में भी हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि केवल प्लांट एंड मशीनरी, नाइदर वर्किंग कैपिटल नॉर द बिल्डिंग, ये एडिशनल हो सकती है। तो 90% इंडस्ट्री MSME में आती है आज की तारीख में। सर मैं वही जानना चाह रही थी, मेरे ख्याल से जो आप पॉइंट पे अंडरलाइन कर रहे हैं बार बार कि अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबको अगर अवेयर होंगे तो ही दे कैन स्टार्ट ऑफ एनीथिंग, एंड अवेयरनेस ड्राइव वी शुड। अब आप अपनी दोनों अध्यक्षों को रिक्वेस्ट करिए कि एक लंच में कितना काम करवाएंगे। थैंक यू सर। ये अवेयरनेस की स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। काफ़ी कुछ आज हमने सीखा जो हमने शायद अभी तक नहीं सीखा था। चलिए, इट्स अ जोक, you should not, you will continue with the questions. Namaste sir, I am Neha Halan and I am into the business of furniture dealing. So I would like to know, like my firm is an MSME registered, but many times I have seen that since we are in the service sector but not in the manufacturing sector, we do not get benefits of MSME. For example, if we talk of a procurement through GEM, so there is a specific line which states that MSME is applicable only to manufacturers and traders are not in the purview of that policy. So why is it that traders are not in that policy? If I'm an MSME, be it a manufacturing or a service, they have to be given equal importance. It has to have a manufacturer
and trader are in two different categories. And both categories have their own privilege and their own challenges. So we should not mix up both the things. GEM has both the thing for trader, different tenders, and manufacturer, different tenders. Any consumer, let it be government or private or public sector, they have their own choices that in which scheme they want to procure. Where they want direct interaction from manufacturer, they will go. You cannot force anybody कि आपको ट्रेडर से ही लेना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरर से ही लेना पड़ेगा. Sorry, I don't agree to your thing. Thank you, sir. Okay. I guess most of the queries you have resolved. Okay, who? Is there any other question? Yeah. देखिए आधे लोग आपके उठ के चले गए, आप होल्ड नहीं कर पा रहे. सर नमस्ते. नमस्कार सर. या प्लीज. मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार है और मैं सर 2015 में हमारा स्टार्टअप रजिस्टर हुआ था और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है पीतमपुर सेक्टर 3 में. हम लोग बड़े यूनिक एयर कूलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा पेटेंटेड भी है. सर मेरी समस्या बहुत छोटी सी है पर इसका सल्यूशन मुझे आपसे अपेक्षित है. सर जो जेम पोर्टल है वहाँ पर जो नॉर्मल कैटेगरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ़ैन, कूलर, एसी, ये अगर आप बनाते हो तो आप उस पर बहुत आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. लेकिन अगर आप मेरे जैसा ब्रांड जो कि जैसे वायु है जो कि ना एसी है ना कूलर है, बीच का इनोवेशन है, इसको जब आप रजिस्टर करने जाते हो तो वो बोलते हैं कि क्रिएट अ कैटेगरी, आस्क फॉर कैटेगरी क्रिएशन. जब कैटेगरी क्रिएशन की बात आती है और रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बोलता है जेम पोर्टल कि आप बायर के पास जाके 5 एप्लीकेशन लाओ. सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बायर से रिक्वेस्ट लेना इज़ नॉट पॉसिबल. आज तक मैं जेम पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ, नंबर 1. दूसरा सर 2018 में मुझे लोन मिला था सेक्टर 3 पीतमपुर में इंडस्ट्री डालने के लिए. 2019 में जब कंपनी बन के तैयार हुई, 2021 में मेन सीजन में लॉकडाउन लगा कोविड का. सर बैंकर्स लोन में कोई रियायत नहीं देते हैं और ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है ये मैं जानना चाहती हूँ. इनिशियल स्टेज पे आप लोगों ने इतना बैकअप दिया, जब कंपनी ग्रो कर रही है उस स्टेज के लिए क्या मिनिस्ट्री दे रही है? देखिए 2 इशू है. जब हम कोई नई क्रिएशन करते हैं, चूँकि मैं खुद इस ट्रेड से बहुत जुड़ा हुआ रहा हूँ. वी वर द इंडिया सेकंड बिगेस्ट कूलर इन एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अबाउट 20 years बिफोर. जब से मैं राजनीति में आया हूँ सब छुड़ा दिया है. तो जब नई क्रिएशन होती है तो सर्टेनली कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसी भी एक आदमी के लिए टेंडर बनाना या उसके लिए प्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी एक छोटा सा चेंज करके बोलेगा मेरा नया प्रोडक्ट आ गया. तो उसका जब तक बायर की तरफ से कि हाँ भाई हम इसको नया मानते हैं, 5 आदमी आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं 5 पब्लिक सेक्टर से अगर नया होगा तो मैं रिक्वेस्ट लेटर डलवा दूंगा आपकी, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मदद कर दूंगा. एक इशू आपका ख़त्म हुआ. जेम वालों को समझ में अभी नहीं आया होगा. जिस लेवल का आदमी बैठा होगा उसका आईक्यू लेवल कम होगा. अब अपन उतना ही एक्सपोज करें जितना ज़रूरी है. हर एक को पूरा एक्सपोज करने से फ़ायदा नहीं होगा. और व्हाट इज़ रिक्वायर्ड उसका डाटा बनवाने में ज़रूरत है तो मैं 5 कारपोरेशन से दिलवा दूंगा. तो आपका सॉल्यूशन नहीं. देखिए कुछ चीज़ें अगर अपन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानेंगे तो कभी हल नहीं होगा. प्रॉब्लम को चैलेंज मानेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा और आपकी कैपेसिटी और बेहतर होगी. आपको मैंने आज अभी उदाहरण दिया कि कोरोना वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजास्टर, उसे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना दिया.
चाइना को ख़त्म कर दिया और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर दी। अगर वो भी प्रधानमंत्री जी यही सोच के बैठ जाते तो आज कैसे क्या होता। तो you'll have to fight. एन एंटरप्रेन्योर शब्द का मतलब ये है कि यू हैव टू हैव ए फाइटिंग स्पिरिट एवर ऑन। अगर आप ये सोचें कि भैया आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलने के लिए आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते, सॉरी हम कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मैंने हर जीएम को एक्टिवेट करा है, पहली बार मैंने एमएसएमई की साइट बनवाई है, उसमें आप अपनी बातें रखें, हम उसमें रिएक्ट करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी के कारण अपॉर्चुनिटी मिली है, वरना चिट्ठियाँ कितने सरकारी डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करते थे अपन सब जानते हैं। आई डोंट वांट टू क्रिब, आई जस्ट वांट टू whatsoever possible support I can give, which 100% confidence only I am going to talk, क्योंकि हर चीज़ अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो दूसरे दिन मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब बैठेंगे तब उसका उत्तर देना पड़ेगा। यस, थैंक यू सर। आपने इतने सारी क्वेरीज का इतना पेशेंटली और इतना सरल शब्दों में जवाब दिया है कि हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि आपने हमें इतना समय दिया। नाउ one round of applause for his patience and for all the queries that he has answered. I would now like to invite Senior Vice Chairperson Ms. Payal Agrawal to give her formal vote of thanks. Thank you, Mamta. Thank you, Mamta. I would like to begin with a small quote. भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफर, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे. Can we have a big round of applause for our minister today? Empowerment is the need of the hour. In this global world where entrepreneurship is the buzzword, we are proud of our flowpreneurs who have paved a path for the women at large. On behalf of Flow Indore, I, Payal Agarwal, Senior Vice Chairperson, thank profusely our esteemed ministers, Honorable Minister for MSME and Science and Technology, Madhya Pradesh, Shri Om Prakash Sakleja ji, Mr. P. Narhari ji, Secretary MSME and Industry, Commissioner of Madhya Pradesh, Ms. Ujjwala Singhania, National President, FICCI Flow, for sparing time for Flow from their busy schedule. We wish to receive your sustained support in the year ahead. We wish the government to continue doing the good work in supporting women empowerment and in promoting women-friendly policies. A very special thank you to parent body FICCI Madhya Pradesh for being supportive always. Thank you, Mr. Shantanu Tripathi and Mr. Saurabh Mishra for always being there. And a big thank you to the press for covering Flow events well always. Lastly, I commend all the women who graced this afternoon with their presence. Honorable Minister ji, if you don't mind, we'll be privileged to have a photograph with you. Can I have the Flow committee, please, followed by the Flow members?